Shri Krishna. Every time you hit the ball, you had to next word, you know, right? Okay. तो वो हमेशा पानी में भी जब वो थे खेल कूद करते थे अपने भक्तों के साथ, और वो ये करते थे कि जैसे कैच करते बॉल इसको देते, बोले जय, बोलेगा श्री, फिर कृष्णा, ऐसे करते खेलते थे. And he would have contests who can swim underwater the most far. और पानी के नीचे कौन स्विम कर सकते हैं, उसका भी कॉन्टेस्ट करवाते थे वो. He would always win. And one time in Malaysia, we had this retreat, and we'd gone to this one island, and Maharaj was there, and you know, it was an island in the middle of the ocean, Langkawi Island it was called. It's a Malaysian territory. So anyway, we had a retreat there, and the devotees were going swimming, and Maharaj, he saved the life of 2 devotees in one day. एक बार लंकावी, मलेशिया में लंकावी में हम लोग गए थे, और वहाँ पे स्विमिंग हो रहे थे, और महाराज ने 2 भक्तों का जीवन बचाया था. He was swimming in the ocean, and the devotee said, "Maharaj, can you help me? I can't get back to the shore." और वो डिवोटीज जो है, भक्त जो थे, वो समंदर में नहाते नहाते बोल रहे कि महाराज मुझे बचाइए, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ. So Maharaj saved one guy, got him back to the, then he had to go back and get the other guy as well. तो महाराज एक जन को बचा के वापस लेके आए, फिर उनको वापस जाके फिर दूसरे जन को लाना पड़ा. Of course, he saved thousands of lives, all of his disciples. और उन्होंने हजारों के संख्या में जीवन बचाए अपने भक्तों को, अपने शिष्यों का. I've heard many other times he rescued somebody from the Ganga, swimming people. You know. I even did that once. But he was always jolly and fun with the devotees. वो हमेशा खुश मिजाज रहते थे. And with me, he was very merciful. और मेरे साथ हमेशा कृपा बरस करते थे. और like I said, he knew, my foolishness. So I think it's time for Janani. Yeah, I think it's time for Janani Vasprabhu. Please come. All right. You can approach at any time. Devotees come up quite often and ask, "Can I ask a question?" अगर आप लोग और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप डायरेक्टली हम महाराज के पास आके प्रश्न कर सकते हैं इसके बाद भी. तो अभी यहीं खत्म करते हैं. I'm available. Okay. अभी हम लोग यहीं खत्म करते हैं. Even online or whatever. Yeah. But here we're in person, so it's easy. Some devotees don't like to ask their questions in public. बहुत भक्तजन ऐसा भी है, वो प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं. Hare Krishna. Hare Hare Hare. Hare Krishna. Thank you very much. So we welcome Janani Vasprabhu. And Prabhu, can you come up so for the translation, no? Just to... Yes. Om Ajnanan Smidandasya. A bit closer for the camera. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Giriraj Maharaj Ki. Hare Krishna. So today we did the Vikram of Sri Giri Govardhan.
आज हम लोगों ने परिक्रमा किया है सुबह सुबह and heard the wonderful pastimes. और लीलाएं सुने बहुत सारे. It describes in the Krishna book where Krishna, he saw that Nanda Baba was making arrangements for a sacrifice. कृष्णा भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे हमारे जो कृपा करते हमारे जो सैक्रिफाइसेस. अच्छा कृष्ण आप बोलिए प्रभु जी. प्रभु तो कृष्ण बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण एक बार देख रहे थे कि नंद महाराज वो एक विशाल यज्ञ के लिए प्रस्तुति ले रहे थे. So Krishna said, Nanda Baba, what are you doing? तो भगवान कृष्ण अपने पिताजी से पूछे कि नंद महाराज आप ये क्या कर रहे हैं. Is it a sacrifice, a popular sacrifice? Is it from the Veda? Is it authorized? बोले कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये क्या एक सामाजिक यज्ञ है या फिर क्या ये वेद में उल्लेख है इसका. And Maharaj said it's more or less a local tradition, local custom. नंद महाराज ने बोला कि ये हमारे एक रीति रिवाज है, ये कोई शास्त्र का नहीं है. But rainfall is due to King Indra, and without the rainfall, the cows won't get any water. We won't be able to do our duties properly. So it's to thank Lord Indra for sending the rain. तो नंद महाराज ने बताया कि ये जो वर्षा है ये इसका जो देवता है वो है इंद्र है और वर्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इंद्र को अपना आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि वो हमारे गायों के लिए हमारे खेती के लिए वर्षा देते हैं. So Krishna spoke and started to preach to his father about the atheism. He was preaching karma mimamsa philosophy, that whatever you do, you'll get a reaction for it, and that's all that's going on in this world. This is karma mimamsa philosophy. It's atheistic because it's depending on nature. तो फिर भगवान कृष्ण नंद महाराज को प्रचार करने लगे कर्म मीमांसा सिद्धांत में, जो कि एक तरह के नास्तिकता है. उस सिद्धांत से वो बताते हैं कि अगर हम कर्म करें तो उसका फल हमें तो मिलना ही मिलना है, तो फिर अलग से क्यों ऐसे पूजा पाठ करना. So it doesn't really need offerings as Indra. You'll get the result anyway. तो भगवान इस तरह बता रहे थे अपने पिताजी को कि आपको अलग से इंद्र का पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं है. Rain falls on the ocean. It's not necessary to have rain there. It falls on the rocks where it's just barren. So what use is it? भगवान ऐसे भी बताते हैं कि जो वर्षा है वो तो समुंदर के ऊपर भी गिरता है, वहाँ पे तो कोई यज्ञ नहीं करता. पत्थर के ऊपर भी गिरता है जहाँ पे कोई फसल नहीं उगता, तो आपको क्यों यज्ञ करना. So Krishna captivated everyone by his charming ways of dealings. तो भगवान अपने वाक्य से सबको मोहित कर लिए थे. And he said we should begin the Indra Jagna to satisfy Lord Govardhan. तो फिर भगवान बताए कि हमें इंद्र के पूजा का ये सब लेके हमें गोवर्धन का पूजा करना चाहिए. So then Krishna advised them, we'll have a grand festival here. And they made the Annakut
festival at Anyor. तो फिर भगवान ने सबको सिखाया कि कैसे गोवर्धन का पूजा करना चाहिए, और उन्होंने एक अन्नकूट महोत्सव किया ये अनियोर गांव में। And this was a great festival, a great feast, Chapan Bhog, so many preparations for that. तो वो एक विशाल महोत्सव था जहाँ पे 56 भोग, बहुत तरह के भोग लगाया गया था वहाँ पे। And then Krishna assumed a form, very big form, and he started to eat all of these foodstuffs that were offered. और भगवान कृष्ण फिर अपना एक विराट रूप वहाँ पे सबको एक विराट रूप में वहाँ पे आए, और वो जितना भोग था सब उनके सामने खाने लगे। What did I say? Oh yes, Krishna began eating all of these different preparations, and Hare Krishna. What? Yeah, everyone was astonished to see that form when Krishna was just eating. Wherever it was, he was eating it. And news got round that Govardhan Hill has assumed the form and is eating all the offerings. तो सब लोग बहुत अचंभित हो गए कि गिरिराज गोवर्धन सबका ये भोग खा रहे हैं। तो ये बात बहुत जल्दी फैल गया कि गिरिराज गोवर्धन सबका भोग ग्रहण कर रहे हैं। Wherever they would bring bhoga, Krishna would reach out and take it, no matter where it was. तो वो जहाँ भी भोग लगा रहे थे वहाँ पे गिरिराज अपना हाथ आगे करके वो भोग लेके खा रहे थे। And then news got round, and all the different villages, they all started to bring, when they heard, they all started to bring the different types of bhogas. तो जैसे जैसे ये बात फैलता गया, और भी गांव से लोग अपने अपना भोग लेके आ रहे थे गिरिराज के लिए। And Giriraj was eating all those bhogas and drinking all the water. और गिरिराज वो सब भोग ग्रहण कर रहे थे, वो जितना पानी लेके आ रहे थे सब पी जा रहे थे। And they came and made their offering, and I thought, wow, it's amazing form. I even had more food in our larder. We could have bought everything, but I didn't think it was anything like this. So they were just thinking like that. If we had known properly, we would have bought more. I left a little bit in our cupboards. And just hearing that, then Giriraj would extend one hand to wherever they were, different village, wherever it was they were thinking of offering, and he would take that and eat that. तो जब वो लोग ब्रजवासी जब अपना भोग लेके आ रहे थे और जब देख रहे थे कि गिरिराज उनका भोग ग्रहण कर रहे हैं, तब वो लोग सोच रहे थे कि मैं तो अभी ऐसा नहीं सोचा कि गिरिराज ऐसे खाएंगे, तो मेरे घर में तो और भी कुछ बचा था, वो भी मैं ले आ सकता था अगर मुझे पता होता। तो गिरिराज उनके मन के बात को समझ के उनका घर जहाँ पे भी है अपना हाथ आगे करके वो भी लेके खा रहे थे। Yeah, then Giriraj was eating everything, and he was saying, "Bring me more, bring me more, bring me more." तो गिरिराज ये सब खा रहे थे और बोल रहे थे और लेके आओ, और लेके आओ। Anyor, the village there is Anyor, 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 bring more. तो एक गांव है अनियोर, उसका मतलब ये है कि और लेके आइए, और लेके आइए। And Krishna was eating all of these bhogas being offered. और गिरिराज जो कि कृष्ण है वो ये सब भोग ग्रहण कर रहे थे। Why did Krishna induce Indra to send the Sambhavtaka clouds and these other heavy clouds? Why Krishna influenced him to do that? तो ये सवाल आता है कि भगवान ने क्यों इंद्र को ऐसा करने को मजबूर किया, या इंद्र को ऐसा
ललकारा कि वो अपना संवर्तक जो बारिश है वो वृंदावन पे भेजे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? Because when Krishna was having the Annakud, he was taking all the food and all the water from all the different tanks, from Govinda Kunda and all these different water tanks. Krishna drank all that during the Annakud festival. So he wanted his ponds and everything filled up again. So therefore he induced Indra to send these big rain clouds so they can fill up all the ponds that Krishna had drunk. तो इसका एक उत्तर ये है कि भगवान जब अपना गिरिराज लीला कर रहे थे, वो अन्नकूट में सब भोग, सब पानी, जितने भी कुंड है, गोविंद कुंड से सब कुंड से वो पानी पी जा रहे थे, तो वो पानी खत्म हो गया था। इसलिए भगवान ने सोचा कि वो पानी वापस भरना चाहिए, इसलिए उन्होंने इंद्र को ऐसा लीला किया कि इंद्र अपना बारिश भेज के वो सारे कुंड वापस भर दे। After Indra had realized he had made a big mistake, and Krishna would like, he more or less kind of ignored Indra, and Indra was thinking that, I've upset Krishna, what can I do? Even I approached him, but still he's not showing any symptom of reaction. तो उसके बाद इंद्र जब अपने उन्होंने अपने गलती माना और इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए थे अपने माफ़ी मांगने के लिए, बट भगवान ने उनके बातों का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इंद्र को बुरा लगा था कि मैं इतना बड़ा दोष किया और उसके बाद माफ़ी भी मांगा, बट भगवान ने कुछ कृपा मेरे पे नहीं दिखाया। Yeah, so Indra he said, I made a big offense. I always do make mistakes. Made a big offense. What shall I do? So he went to see Surabhi, mother cow, and she advised him to go to Navadvip and get the blessings of Gauranga Mahaprabhu. He's a very merciful form. Krishna is a very, very merciful form, and he may forgive you for your offenses of Govardhan. तो इंद्र फिर सुरभि गाय के पास गए और उनसे पूछा कि मैंने ये बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके लिए भगवान भी मुझे माफ़ नहीं कर रहे, तभी मुझे क्या करना चाहिए। तो सुरभि माता ने उनको बोला कि आप नवद्वीप जाइए, मायापुर जाइए, वहाँ पे आप गौरांग महाप्रभु का दर्शन कीजिए, वो शायद आपको माफ़ कर सकते हैं।